Okay, so first we will use the pandas and then we will move to the SQL in the same file. So we will process the some structured data set on the basis of SQL query and then we will move to the pandas. उसके पहले then we will focus on the pandas. So first and foremost, I'll have to import Databricks notebook source in PySpark in order to execute data frame in PySpark. So this is the PySpark dot SQL and I'm going to import Spark session. Spark session. And as we discussed earlier, uh, after some version of the Spark, we don't need to import that Spark context and everything. So Spark is equal to Spark session that uh, that object is going to build here. I'm going to build my app. This would be the app name, and here I'm going to write Spark data frames. So whatever app is there, I'll have to name it. If it is already there, so it will fetch Get or create. that app. Otherwise, it will create that app consequently. So sometimes what happens, it produce error on the screen. So in that case, you will have to import, you will have to install this software, this library. So using the pip install PySpark, and if it is not working, then I'll have to import this PySpark in my session. In my notebook. Now once I have imported this one, I'm going to import So, Sachin, where we have written this builder.app, we are just giving the name, right? Spark data frame. name, also giving also passing command to the compiler that hey compiler just create this app name and whatever will be there in upcoming line when we Mm-hmm. move forwards. So it Mm-hmm. will have the same context. It will have Okay. all the respective values, respective output. Mm-hmm. Okay. I'm going to read my value. This is the option, read option, and here I'm going to use the header. So why header? I need header. Only So header. only header and no, or not only header, but I'm going to enable my header. Mm-hmm. So this would be the header, and where I have the data set, I'll pass in data frame. So Mm-hmm. if Azure is having the data set, so that blob storage will pass here. Blob Correct. storage address will pass this. Mm-hmm. ADLS is having that Azure data lake storage, then we will pass that ADLS Gen 2 address over here. But before that, I think we have to mount, right? Yes, Mounting is needed. yes. But you will have if you are working over the Azure now, then it is Mhm. not required. Okay, Azure Databricks. Yes, Azure Databricks में काम कर रहे हैं, then you can see you do not have to worry about that mountation. Mm. Can you see now it's showing column 1, column 2, column 3 respectively, and this first column is treated as a record by placing this false. Okay, header equal to false. Header equal to false. And when you are putting this header equal to true, means you want to make first row as the column name. Then Okay, C0, C1, C2 won't be there. okay, So I'm going to make changes again so that we will have true. proper header Mm-hmm. and column names. So for example, if some data set is having starting with the record itself. So unwillingly it will convert first row at the first place. It will throw first row, first record at the first place. चाहे वो उसका कॉलम का नाम है या नहीं. Mm-hmm. ओके और अगर हम लोग यहाँ पर रीड CSV लिखते हैं तो बिकॉज ऊपर में स्पार्क डॉट रीड डॉट ऑप्शंस भी लिख ऑप्शन ही Yes, we read options because read ओके CSV is for data frame. जो Python का code है. ओके Spark is not responsible, not readable for that. For example, if I want to print the schema of the
data set. Mm. Then I have to write df dot Print print. schema. I think you have not read Python. Yes. पाइथन का डेटा फ्रेम आपने पढ़ा है? नहीं, मैंने पाइथन नहीं मालूम है मुझे। हाँ, this is the reason. So that is the read pd dot read csv. So for this we had to import pandas as csv. Then I have to write the df2 equals to pd under pd Dot dot read read under dot csv. CSV. Yes. And The then path okay, pandas as SPD. pd. Pandas pd. And then I have to pass this value. Oh, oh, Okay, we have to import the panda first, right? and Im- Import panda is maybe okay, so it's a p pandas dot read csv and then df2 dot head. When we will look at the head, so by default it will throw first five records, hmm, and this header is by default is shown here. So you don't need to have to worry about the header itself inside the pandas data frame. okay. If I want to show last df.tail last five Hmm. records. So I'll have to write df2.tail in order to depict last five records. It shows Hmm. last five records. But if you want to show any random first 10 records, so here we had the first 10 records. Can you see? Starting with the 0 and ending with the Hmm. Okay. If I wanted to see only three columns, first three, yeah, or maybe any columns like any column. vendor name So or in case of first three, we will print head. In case of any no, three, that is a record actually. I wanted to print oh, only first column. Okay, yeah so three then columns. three columns. So then you will have to write the first zero, 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 comma two. Two, then comma zero, two, two. Four. So using the I location means index location, I Hmm. have to write this is first position is for row and second position is for column. So when I Okay. write 0 to 3, so means 0, 1, 2, first three column will be there. A gender name. So Okay. this So iloc and colon zero means first index and three index, right? okay. So this is having two partitions. First one is before comma Mm-hmm. and second partition is after Okay. comma. What we had, this is dedicated for the row, column and row. So this is the row. For example, if you say one code 3, so it will track कि 1 2 केवल दो कॉलम उठाने हैं because second position is excluded. Mm-hmm. That's a column. So when I have to write 0 2 5, so it will pick 0 1 2 3 4. Four. So 5 is Yes. excluded here. Mm-hmm. Correct. Now if I do not give anything here, like just giving the empty, just giving empty place, just keep it empty and colon 3, then it will start picking from the first place. Mm-hmm.
एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता हूँ एंड 4 इज देयर, इट मींस इट विल रीच टिल द एंड। तो सब 4 से उठाएगा और एंड तक दे देगा। हम्म, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया कुछ भी नहीं, मतलब कि आपको सारे स्टार्टिंग से लेकर सारे रिकॉर्ड लास्ट तक देने हैं। So that's the first row and column. But I'm going to give 5. So what is the meaning? Starting from the first row, ending till the last, till the fourth column, like fifth column. 0, 1, 2, 3, 4. हम्म, तो ये केवल मुझे 0, 1, 2 देगा। तो 0, 1, 2। ओके। और अगर आप यहाँ पे देखोगे एज जेंडर नेम, तो 0, 1, 2 कॉलम्स इज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेस। एंड अगर आप देखोगे तो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स दिया 0 स्टार्टिंग से। अगर मैं 2 से दे दूंगा तो क्या होगा? 2, 3, 4। तो ये हम लोग को इसको ब्रेसेस इसमें देना पड़ेगा, Yes, df डॉट टू आई लॉक। yes. And also, if you want to see a specific gender column, so you will have to write this df2 gender. So it's showing df2 underscore gender. Okay, if I say directly to the column name, that also it will be print. Yes. And if you look at the type of this particular gender column, it's showing df dot series because pandas is having two kinds of data frame. What Mm-hmm. kind of these data frame? First one is the series, second one is the data frame. So here we have the data frame. So like for series is for single dimension. Mm-hmm. Example array. The series is array. When we talk about multi-dimension, then we have the data frame. So we will be using multi-dimensional data set. That is, for example, matrix. अगर आपको कोई बोलता है कि मैट्रिक्स क्रिएट करो, then we will be using data frame. More than one value, more than one column, more than one vector, I would say. For example, अगर आपने मैथ में पढ़ा हो vector as well, जो कि न्यूरल नेटवर्क में यूज होता है। So if you need single vector, single array, single dimension value, then we will be using series. It will Mm-hmm. produce series data set. When we have multi-dimensional array, more matrix, two dimension, three dimension matrix, or Mm-hmm. XY frame, then we will be using data frame. Okay. Multi-dimensional single series dimensional Yes, array. yes. So I'm going to check this df2 tail. But if you check the type of df2, it won't produce series, pandas.series. Rather, it's giving frame.dataFrame. This is Mm-hmm. the difference between data frame and if you look at the series. Where Oh, because it's a consisting more than one column, not on a mm-hmm. single dimension but more than one column. Can you see two dimension, size, variable, potential, heterogeneous tabular data. Mm-hmm. On Okay. a Spark, we had the read dot options where we are reading these file, putting the header by default true. PD in PD, this header is by default true, right? Yes, Panda in the yes, Panda. yes, Okay. yes. By default, it's reading as the this one. But even Mm. this is also giving option if you want to make it off. Okay. And without Panda, we have to see, we have to give header equal to true No, not say without Panda. Just say in Spark. in Spark. This Okay. is the technical term. In Spark, you will have to manually header is equal to true. Mm. Options. There are more options. You will see other options one by one.
Let's say I'm going to create df. I'm going to copy this df importing data set, and I'm going to provide schema manually. So what exactly it's meaning? So here I just copy this. This is the read options. I'm going to give read options here, and now I'm going to use infer schema. So what is the infer schema? I want to tell to the compiler that just keep this schema as per the given value. Like if something is integer, it would be integer. Something is uh, float value, it should be float. But if you see here, we do not have these A's, these columns in the format of this one. These marks are not in the format of integer. If you recall in the earlier lectures also, we had to convert into the integer. But यहाँ पे integer में नहीं है, ये string format में. तो Okay. उसको infer schema से क्या करते हैं हम? उसको हम define करते हैं कि आपको यहाँ पर schema ही देना पड़ेगा. मतलब कि उसको जो integer है वो integer के format में ही होना चाहिए. Going to put header is equal to true and delimiter जो है हमारे इस समय क्या है? CSV फाइल है तो कॉमा अगर TSV फाइल होगी means tab separated value so you Mm-hmm. have to give tab here. So actually, like suppose I have a file in one container, Hmm. okay, where we have the CSV file. I wanted to convert into TSV in the next container. Hmm. So this would help, right? Yeah, no. That's wrong. I want to import file which is separated where values are separated by comma. Mm-hmm. So if you open this file, this download this student data, if you will see inside the notepad, It these will be values comma separate. are separated by comma. Mm. तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि आपको वैल्यूज उठानी है जहां पे आपको कॉमा मिले. इन द फर्स्ट अच्छा. रिकॉर्ड wherever you find comma, you just treat it as a new value, as a Mm-hmm. new identity. Okay. So we are gonna talk with the compiler that the approach of using or fetching records is because of comma. और अगर यहाँ पर TSV वैल्यू अगर ये फाइल होती तो जो वैल्यूज होती वो कुछ ऐसे होती. टैब, फिर यहाँ पे टैब, वहां पे कॉमा नहीं होता कुछ भी, सब टैब से सेपरेटेड वैल्यू होती. अगर टैब सेपरेटेड है, that means TSV format, right? यस, बट दैट्स रियली यूज्ड इन द कंपनी और एनीवेयर. बट मैंने इसको पढ़ा है कि टैब सेपरेटेड वैल्यू भी होती है एंड दैट इज यूज सीक्वल एज वेल. सीक्वल में उसको कन्वर्ट करने का बहुत ऑप्शन, मतलब इंपोर्ट करने का प्रॉपर ऑप्शन है. हाँ, तो Also, एक्चुअली PowerPI is also having that characteristic where you have tab separate, where you can import tab separated file. नो, हमारे प्रोजेक्ट में कैसा है कि जो फाइल आती है Hmm. वो CSV में आती है. Hmm. ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट कंटेनर में जब जाती है, फर्स्ट Hmm. कंटेनर में तो CSV होता है, सेकंड कंटेनर में जब जाती है तो उसको हम लोग TSV में कन्वर्ट करते हैं. Okay. So once you have converted into TSV, means if you will try to import here, then you will have to see delimiter is equal to tab. तब वहां पे ओके. आपको अगर सारी की सारी वैल्यूज कॉमा में है तो आपको हम्म. कॉमा से रीड कराना होगा यहाँ पे. अगर टैब से हम्म. वैल्यू है जो आपने बोला डेस्टिनेशन में टैब पे पहुंचती है तो हम वहां पे हम्म. डिलिमिटर इज इक्वल टू टैब देंगे. ओके. इसका मीनिंग ये है क्योंकि अभी ये रीड कर रहा है फाइल को इस एड्रेस से. मेरे पास एक्चुअली एक ये था, मैं पिंग करता हूँ कोड. तो इसमें एक ऐसा एक मिनट है. बस मैं ये कोड कंप्लीट करता ना हाँ, फिर हाँ. मैं आपको बताता हूँ ना. फ्लो वी विल डेविएट फ्रॉम दिस ओके. टॉपिक.
So this is the DF, and here we have all the columns and everything here. Right? If you look at here, can you see? Here we are going to print schema of the data set. Can you Mm-hmm. see? This is string, 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 string. Everyone is showing string format. Okay. But now if I'm going to print this df3.show, and I'm going to copy this code and try to print schema here. This is the df3 schema. Can you see? Now it's showing integer. Now it's showing integer. Now it's showing integer. जो दो तीन कॉलम मेरे इंटीजर फॉर्मेट में है वो इंटीजर ही के फॉर्मेट में है. This is just because of this infer schema is equal to true. Okay. तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं what is the use of this infer schema. So you are Mm-hmm. going to provide this infer schema accordingly. Okay. Is it clear each and every code? Yeah. Like बट स्कीमा लाइक एक फाइल है, अगर फाइल फाइल का जो स्कीमा रहेगा हम्म, उसको हम लोग मतलब हाँ. जो स्कीमा में जैसे मान लो सपोज दिस आर इन द स्ट्रिंग, तो हम्म. हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं या इसको सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं? सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस ना. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. जस्ट ओपनिंग दिस फाइल, and this file is having salary comma age comma name, and hit enter. Salary is 70.3 comma age is 85, name is such a. I'm just storing this value, Mhm. and this EMP, and this importing here. Trying to import here, upload. So, yes, this EMP file is there. Oh, I'll have to save in, in, in the format of CSV. So save as, it's a TXT format, so that's Mhm. wrong. So at the desktop, I'll have to change emp.csv. Look at the, can you see this Mhm. emp is need to import it here. So I'm going to import here. If it is showing here, I can copy the address of this emp, copy path, and going to paste it, replace it here. Now it's having emp.csv. Now it's showing df.show. Can you see? ये value है. If I want to see the schema here, it's Mhm. showing string string string. जबकि यहाँ पर इसका float value है. यहाँ by default value integer है, but यहाँ string है. But इसको ये सबको string string show कर रहा है, which is incorrect. तो ये डेटा उठाने के टाइम पर ये रॉन्ग तरीके से उठा रहा ओके. है, या ये कह लीजिए कि बाय डिफॉल्ट तरीके से उठा रहा है. If you want to change that operation, so you have to add infer schema is equal to 2. कि मतलब जो schema proper है Mhm. 75.3 वो वहां Mhm. पर वैसा ही होना चाहिए. So what I do, I I just replace this address, and just because of this property behavior कि जो उसका schema है वो ही होगा, तब तो आपको ये तो एक ये कोड, हाँ. DF3 का schema हुआ. ये DF3 का schema. या, अब आप देखो ये डबल में शो कर रहा है. दिस इज द प्रॉपर schema. Mhm. इज इट करेक्टिंग नाउ? लाइक बाय डिफॉल्ट अगर आप पावर बीआई में भी कोई भी फाइल उठाते हो तो वो ऑटोमेटिकली चीजों को पकड़ लेता है कि ये डेट फॉर्मेट में है, ये मनी का डॉलर का सिंबल है तो ये अमाउंट होगा, ये
बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो लोकेशन के बेसिस पे होते हैं। हम्म लोकेशन में होता है आपके लॉन्गिट्यूडल लैटिट्यूडल। हम्म तो अगर पावर बीआई में आप देखोगे तो जो भी कॉलम डेट फॉर्मेट में है तो उसमें डेट में ऊपर शो कर देगा। कोई भी फ्लोट है तो फ्लोट शो कर देगा। कोई भी लॉन्गिट्यूडनल है या लैटिट्यूडल है, तो जो वो जियोग्राफिक एरिया है उनके बेसिस पे भी वो शो कर देगा। समटाइम्स इट हैपेंस कि अगर आपने कोई कंट्री लिखा है तो कंट्री के नेम्स भी वहां पर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इतनी कैपेसिटी है पावर बीआई में। पावर हम्म बीआई सो पावरफुल टू आइडेंटिफाइंग द कंट्री नेम्स इटसेल्फ। हम्म समटाइम्स स्टेट्स के नेम भी वो और प्रोविंस के नेम भी पहचान जाता है कि इस कॉलम में स्टेट लिखा हुआ है तो वहां पे ग्लोब का सिंबल लगाना है। हम्म So this is the property of Tableau and Power BI कि वो इन नेम्स को भी पहचान देते हैं। हम्म। तो कोड में हम वही चीज कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्कीमा मैनुअली जो है वो परफॉर्म कर रहे नहीं तो ये तो एग्जैक्टली बाय डिफॉल्ट हमको लगाना ही पड़ेगा ना, ये कोड तो लिखना ही हैं। पड़ेगा कोई No, भी फाइल को रीड no, कर। no, no, that's not compulsory again. People will say it's compulsory, layman will say compulsory, but I would say no. Sometimes you will have to just copy the data set and paste it somewhere else. So ओके। why are you performing this transformation code here? जबकि आपको यहाँ पर क्या करना है? Simply you will have to read this file. You have to delete sub column. You will have to make some changes, fill the null values, and just transfer to the SQL server or Apache server or some Oracle server database. So in that scenario, why are you converted to the integer or double format? Why are you importing this info? जब वैसे ही रहने दो ना, प्रॉब्लम क्या है? जब जरूरत पड़ेगी तो उसको अपने आप को जो डेवलपर होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेगा, ओके ओके। डेस्टिनेशन के टाइम पे ट्रांसफर कर लेगा। क्योंकि आप अगर इस लोकेशन से आप चीजों को भेज रहे हो, यहाँ पर एक लोकेशन है, देन यहाँ पर एक लोकेशन है, देन यहाँ पर लोकेशन है, एंड मे बी दिस लोकेशन इज कॉल्ड क्लाउड, AWS cloud, and we know Azure cloud, and we know Azure cloud is chargeable, और वो आपके डेटा सेट की वॉल्यूम के बेस पर आपको चार्ज कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे। तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ कॉस्ट लग गया, भले ही वो बहुत कम हुआ, $0.01 हुआ, बट वो कॉस्ट तो लग गया ना। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 12,000 करेक्ट। से तो आपको तो चार्ज अननेसेसरी लगा ना। हम्म तो व्हाई आर यू डूइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन हियर व्हिच इज अननेसेसरी रिक्वायर्ड? जबकि वो कहाँ से मूव कर रहा है? वो इस लोकेशन से मूव कर रहा है, इस लोकेशन से, और यहाँ से किसी को कॉपी करके पेस्ट करना है। मान लीजिए वोडाफोन का सर्वर है, फिर वो सर्वर के पास में मेन सर्वर पे जा रहा है, क्लाउड पे स्टोरेज हो रहा है, फिर वो कोई ऐप किसी ने डिजाइन किया है वहां पे कस्टमर को दिखाई दे रहा है, और फिर यहाँ पे कोई विजुअलाइजेशन का पार्ट हो रहा है। तो व्हाई नॉट हियर? व्हाई नॉट दिस ट्रांसफॉर्मेशन हियर जहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है? एक्चुअल नीडेड। हाँ, एक्चुअल नीडेड, जहाँ पे वो विजुअलाइजेशन दिखाना है कस्टमर को, ऐप के ऊपर या वेब ऐप के ऊपर या सर्वर के ऊपर। ओके। तो और दूसरी चीज ये है कि अननेसेसरी यहाँ से लेकर यहाँ पर भी उन सब ट्रांसफॉर्मेशन को करने का इट विल टेक सम टाइम एज वेल एज मनी एंड टाइम बोथ। तो लेमन लैंग्वेज अगर आप वीडियो देखोगे यूट्यूब के या कुछ भी देखोगे तो डेफिनेटली यू विल से दिस इज द नेसेसरी स्टेप एंड दिस इज। लेकिन जब आप क्लाउड के एस्पेक्ट में जाते हो कि यहाँ पे स्पेस और मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ए क्विक रिव्यू, आई वोंट रिकमेंड दिस अननेसेसरी स्टेप। ओके। Again, we can import this py spark.sql.types, which is going to import other structure. So I'm going to change the structure of my field. So this is the field struct type and struct field, and later on
I'm going to change this struct type as well, and then integer integer type. So this is the necessary, these are the necessary libraries I have to import if I want to change the schema. I'm going to assign a variable. The name of this variable is schema here. So what is the role of schema here? It's going to change structure type. So whatever type is there of my column. Okay, I have to change this column first. So this is the student data. I have to copy this part. df df3. So df3 में कर लेते हैं. Make changes here. Show whether data set. Schema. Yes. Here we have integer, schema, and everything. I'm going to provide the struct type for each column. So this column is converting everything one by one. कि जैसे age का column है integer, इसको integer रखो, इसको integer रखो. So you are performing type casting manually. तब integer, float, जो भी value है वो यहाँ पे आपने manually दिए. Okay. ठीक है? So, type SPR casting type is shown properly. If I add code here, and df4 equals to spark v dot options, and here I'm going to put enter is equal to true. This is the first value, and then given my schema. अब मैं infer schema नहीं लेता हूँ, मैं by default मैंने जो बनाया schema that's going to import here. So this schema might be Sachin, this variable might be Manish or anything or T or P. So I'll have to pass this variable here, which is consisting all the columns name typecasting schema, then CSV file, and whatever the address of this file will be here. ये एग्जैक्टली ये जो स्टेटमेंट लिखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है? मतलब मुझे तो मैं भूल ही जाता हूँ सिंटैक्स. ये वाला हाँ, मतलब कोई भी ये लिख रहे हैं तो सिंटैक्स एक्चुअली जनरली याद रहना चाहिए क्या हम लोग को कि करते सिंटैक्स करते याद हो जाता है. जैसे कि अभी यहाँ पे ये ऊपर था pd.csv. So the name itself is showing that you are creating a Spark, which is the distributed system. Then you are not importing pandas. Then you are going to read your file. Then you are giving conventional or mandatory options. So this is the options. Then अगर आपको बार बार उसी कोड को लिखोगे, उसी को रन कराओगे, then you will have that option. ओके. वो read हो जाएगा, right? So this could be the option. Okay. So I used to teach online और बैचेस हैं, तो उसे करते करते क्या होता है कि याद हो जाता है. So if I try to print ds4 dot schema, can you see on showing integer string. Because if you look at the earlier code which was showing the integer or something, roll number C4 integer, but here we had the only these columns. जो कॉलम मैंने दिया है और देखो वहां पे C4 वाला कॉलम है. We had defined only 1 2 3
4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many columns do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many columns do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If you look at the previous code, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये वाला जो कॉलम है, this is not included schema. Yeah, this is reason this one. Okay, let's remove this for instances. I'm going to comment this gender. I'm going to run this. I'm going to import this file again. I'm going to show this file. Can you see gender column is not shown here. ठीक है, अगर वो आपसे इंटरव्यू पूछता है कि आपको पर्टिकुलर कॉलम चाहिए और वही आपको आगे फैच करके लेके जाना है, तो यू आर गोइंग टू building and leveraging particular column out of the given sheet. ओके तो आपको schema custom schema बनाना है, then using this schema just pass the variable name. This variable name might be Sachin or Manish. कस्टम स्ट्रक्ट Yes. ओके ओनली सेलेक्ट करके मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ Select करके हाँ definitely there is option. यहाँ coming session you see that options. कि मुझे उसको स्ट्रक्चर को चेंज करने की ये करने की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ वो सेलेक्ट करना है For कॉलम्स एंड देन example, DF4, DF4 is the current one. Yes. So DF4 is the data frame. Then I'm going to select and then DF4 dot is comma DF4 dot email. Going to show that column. Can you ओके see? It's showing only सो two columns. ओके सो can you go up okay select you have only selected whichever column is needed and then show it right Yes. Or you can put like this one. So this is the so every time this is needed df4 or no not needed I believe uh, every time is, for example, we need to process only these two columns. uh-huh In that scenario, we have to select these two columns. no in the argument like suppose if you select only the age and email not df4 because df4 we already selected in the first right it won't work or no Just for example, I'm going to show here 5 equals to this one. Now, df5 dot show. Can you see? Now this df5 is containing only these two columns. Hmm. So Okay. if you will print df4, df4 में जो ingredient है वो क्या है, अभी भी ओरिजिनल है, Mm-hmm. लेकिन DF5 में वो सिलेक्टेड है. जैसे कि आप बोलो कि मैं कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल कॉलम्स को अलग करना चाहता हूँ, यू वांट टू गो फॉर मशीन लर्निंग एल्गो और कोई सिलेक्शन एल्गो है या कोई आपको डेट का कॉलम अलग करना है, so this would be the this one different data frame. or if you look at the कैटेगरी कॉलम, तो कैटेगरी जिसमें स्ट्रिंग है कैरेक्टर है वो आपके किसी और में चले जाएंगे. So this would be the another, for example, df underscore category, and this will store df underscore df. Then you can move it, क्योंकि कुछ कॉलम ऐसे हैं जैसे आपको कोई हिरारकी बनानी है, कुछ आपको डेट टाइम का आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, कि उसका डिलीवरी कब हुआ है, उसका रिसीविंग कब हुआ है. जैसे मेरे ग्राफ्स में एक एक प्रोजेक्ट आया था, उसमें डिलीवरी का
हमें पता लगाना था डिलीवरी और रिसीविंग में कितना डिले हो रहा है, कि हम्म, अगर कोई भी कस्टमर का कंटेनर चला है एक लोकेशन से, तो दूसरे लोकेशन पे कितने टाइम पे पहुंचा, या उसको रिसीव हुआ है तो प्रॉपर डेट पर, टारगेट डेट पर रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। हम्म, इन दैट सिनेरियो यू विल हैव टू लुक एट द डेट, तो हमें कौन से चलाने पड़ेंगे, जैसे उसमें होता है डेट अंडरस्कोर डिफरेंस करके एक फॉर्मेट होता है, तो हम्म, दैट डेट डिफरेंस विल वर्क ओवर दी डेट, जब कॉलम होगा तभी काम करेगा, अदरवाइज कॉलम ही काम नहीं करेगा। तो उस केस में आपको अलग डेटा फ्रेम बनाना होगा। और फिर वो देखते थे कि वो डिलीवरी किस चैनल से हुआ है, एयर से हुआ है, फ्लाइट बाय रेल हुआ है, या बाय शिप हुआ है, या बाय बाय फोर मतलब फोर व्हीलर के थ्रू हुआ है, क्योंकि वो मैटर करता है। ओके। तो फर्स्ट दे हैड टू फिल्टर इट आउट कि अलग अलग कैटेगरी अलग अलग में चले जाए, देन चेक कि वो डिलीवरी और रिसीविंग में डिले कितना हुआ है। So we have to create different category, key category ship, category flight, category road, category by air, ऐसे करते हैं। ओके। तो अभी जैसे ये जो डेटा फ्रेम है इसमें हम लोग बहुत सारे जितने भी एसक्यूएल के ऑपरेशन है वो सब हो जाएंगे, करेक्ट? हाँ, तो लाइक स्ट्रिंग ऑपरेशंस डे। I'm coming that point. So here we just define the two data frame. If I want to show df4 dot select, and here I'm just passing the column name is comma gender, and eventually I'm going to show this value. This is the double quotes. ओके, वी शुड गिव ऑलवेज इन द कोट, डबल कोट, राइट? Because it's a without data frame ना, हम्म, data frame के dot operator से नहीं है। df4 df4 is page and okay, gender is not there, name is there, so that is wrong column. This is also another option. This is the first option, select particular columns, method number one। Can you see? मैं एक reference दे रहा हूँ df dot age, in that scenario you don't have to put that codes, single code or double code। Here also I just provided the column name, but stored in different, I just created different data frame here, which will consist only data frame। ये केवल डिस्प्ले करेगा, लेकिन इसको आपको बार बार यूज करके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, देन यू विल हैव टू जस्ट आपको डिस्प्ले करना है that this code is sufficient, this code is sufficient, rather than displaying particular columns you want to go for some transformation। आपको इस एज में कुछ 10 से मल्टीप्लाई करना है, या मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, या आपको कुछ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू स्टोर इन सम डेटा फ्रेम, न्यू डेटा फ्रेम, then you can proceed। If ओके। in the second option is provide the only column names along with the codes, and again you are displaying here, you cannot transform anything here। So let's see SQL in PySpark, how to perform SQL function here, and then to import PySpark SQL functions, and then to import column, this is just using the column method। Let's see df dot select, Collect list, why we written collect list? this is going to collect the columns। I just show you part here. How many columns do we had? We had inside this df, let's see, df4 dot show,
So we had A's name post. Mm-hmm. So inside the column, I'm going to display name. This is the first column. And then I'm going to select the column which is having the another name is age. Another column is name. And then show. This is DF4. Not define. Oh, color list. It is CUL. That might be another method, but this method is CUL only, which is collecting particular column names. This is Yeah, okay. That is the same method we apply, right? yes, but the order is different. Can you see? This is showing name first and age. जो आपने यहाँ पे order दिया है, that is the order. This is the same order. Same order only. If I'm going to display all the values, email. So I want to print email first or this mark first. So it will show that mark first. So I have to write column inside the long parenthesis and just put the mark here and then this marks is showing at the first place. Okay. Mhm. If you want to show all the columns, so here we have df4 dot select and then stick. We know stick is Stars the show all. star. Yes, this is showing all the columns. If I So want, for this we have imported PD, right? no, we have not imported Spark SQL. Spark. We are working on Spark SQL. We are working Yes, on yes, uh, yes. this one, uh, SQL only. Okay, okay, okay. PD और pandas का कोई रोल ही नहीं है. हम्म, ओके सो पीडी जो है वो फिर किस लिए यूज करते हैं हम लोग? आप ना देखो मैं इसी में ना एक डेटा ब्रिक्स डेटा हम्म, ब्रिक्स के जब हम क्लस्टर क्रिएट करते हैं देन वी हैव टू क्रिएट वर्कर्स. वो हम्म, उन वर्कर्स में इस काम को डिवाइड कर देगा मल्टीपल वैल्यूज में, मल्टीपल रोज में कि भाई ऐसा करो 10 रोज तुम करो, 10 रोज तुम करो, 10 रोज तुम करो, 10 रोज तुम करो और उस काम को 1/10 समय में मुझे करके दे नहीं दैट आई अंडरस्टूड दो. मुझे क्या लग रहा था कि जो स्पार्क है ठीक है. So whenever you are putting a query to the server, so it's fetching this value. ठीक है. और इस वैल्यू को लेने डिस्प्ले करने में उसको बहुत सारा पीछे प्रोसेसिंग करना पड़ा. या आई अंडरस्टूड बट एक चीज मुझे ये बताइए कि स्पार्क में और कौन से मॉड्यूल्स होते हैं मतलब आप कि यहाँ आएंगे धीरे धीरे करके सारे मॉड्यूल. सो I will send that list. What kind of modules do we have in this part? तो मतलब मुझे ये पांडा की जरूरत नहीं. अच्छा पांडा इज पार्ट ऑफ पाइथन. Until unless they do not say how to like अगर आप they will simply state कि मुझे केवल जैसे आपको वो बोले कि df4 dot select and let's say df4 dot columns and here I'm just printing 2 to 4 and I'm going to show this value. It's showing 2 3, so 4 is excluded here, so it will show only 2. So what's 2 here? This 0 1 2 course और and roll number. So they will ask that hey Manish just print third and fourth column. Now it's your choice कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं. अगर वो स्पेशली बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो यू विल हैव टू शो कि आई एम यूजिंग PySpark inside the PySpark code. This is the way I can show the code. और आप सारे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक ही सीरीज से सॉल्व करते हुए ला रहे हो.
बट सडनली इफ यू इंपोर्ट, ऑफ कोर्स मैंने आपको ये वाला जो सॉल्यूशन है ऊपर भी करके दिखाया था, जो पेंडा से सॉल्व हुआ, तो ऑफ कोर्स हम वहां भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई लॉक के थ्रू। बट ओके। मैंने आपको आई एल ओ सी नहीं बताया, क्योंकि फिर आप भी बोलोगे अरे यार सचिन, अभी तो आपने मुझे स्पार्क के सारे कोड बताए, आप करते करते एकदम पांडास पे जंप कर जा रहे हो कभी। नहीं, एक्चुअली ये आप थोड़ा अगर शुरू में क्लियर कर देते ना, क्योंकि मुझे एक्चुअली कैसे, आई एम नॉट फ्रॉम कोडिंग बैकग्राउंड, नहीं नहीं, तो मैं मुझे कैसा आप लग रहा है, हम्म मुझे ये सब कैसा है कि आपने बोला पाइथन इज पाइस्पार्क इज एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। हम्म तो मुझे ये लगा कि जो भी पाइथन के मॉड्यूल है वो हम लोग पाइस्पार्क में भी यूज कर सकते हैं। ओके। नहीं, और code is almost similar, similarity is here, but difference is we are using Spark here, जो Spark है, and actually this Spark is uh, uh, inspired by Scala, तो जो Scala का कोड है that is mixed with here, so Python जो है मिक्स किससे हो गया है, Scala से, तो हम एक्चुअली यहाँ पे Scala प्लस Python पढ़ रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आप Python का कुछ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम स्काला, स्काला वाज प्योरली बेस्ड अपॉन स्पार्क डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, क्योंकि कल क्या हो रहा था वो, हम्म उसमें मैंने उसको, उसने बोला कि फाइल रीड करो, हम्म। तो मैंने ठीक है। Okay, so thank you for joining here. So we'll see in the next lecture. हाँ हाँ।